Good afternoon friends and welcome again to another class of Parijat sir classes. तो आज जो टॉपिक हम लेके यहाँ आए हैं दैट इज इट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ द फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का ये फोर्थ चैप्टर है एंड इट्स कॉल्ड द कैपेसिटेंस. तो इसके पहले ऑलरेडी आई हैव लोडेड कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारे चैप्टर्स हमने लोड कर दिए थे. सो नाउ दिस इज द फोर्थ चैप्टर विच इज द कैपेसिटेंस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है. दिस इज द फोर्थ चैप्टर. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर टुडे इन डिटेल्स एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन माय अदर topics which is the Coulombs law मैंने पढ़ा दिया था. then I covered electric field ये भी मैंने कवर अप करवा दिया था. and then I covered the potential chapter, ये भी मैंने कवर अप करवा दिया था. so all these three chapters have already been done. उनका पूरा थ्योरी, फिर उनका पूरा जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो सारा हमने डिस्कस कर दिया था. And I hope you have gone through that. So what I will be doing today is we will be doing the chapter capacitance. So before I start the chapter, I would like to request you, please follow Parijat sir classes. Please follow Parijat sir classes. And please like, share and subscribe जरूर करिए मेरे इस चैनल को. like, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को सो दैट इट ग्रोज. आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू. ठीक है. सो विद दिस लेट अस स्टार्ट द चैप्टर कैपेसिटेंस एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर कैपेसिटेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर. ये पॉइंट्स क्या हैं? आई एम शोइंग इट टू यू. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स. नंबर 1 Point number 1 says inside a conductor, याद रखिए, inside a conductor electric field is zero. Inside a conductor electric field is zero. For example, देखिए, this is a parallel plate. आपको दिख रहा है parallel plate. It is connected to the positive terminal. It is connected to the negative terminal. Right? इसके अंदर क्या होता है? We put the electric field lines are coming from the positive terminal to the negative terminal. देखिए, positive to the negative. इसके अंदर अगर आप कोई कंडक्टर रख देते हैं, this is a conductor, it is a conductor. तो देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इंड्यूस करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस करेगा. राइट. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो अगर ये पूरा फिल्ड अप होता तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे है? इट इज टुवर्ड्स दिस साइड. एंड आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है. E0 का डायरेक्शन किस तरफ है? एंड इफ द होल कंडक्टर इज फिल्ड विद इन द प्लेट्स, तो क्या होगा? इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा एंड देयरफॉर E0 माइनस EP, ये जो होगा E0 माइनस EP, दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0. तो याद रखिए कि बिकॉज कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है. इन गॉसेस थ्योरम वी ऑलरेडी लर्नड E डॉट ds इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा है, Q बाई एप्सिलॉन O. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो अगर इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज तो रहता नहीं है. चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स आउटसाइड द कंडक्टर. ये जैसे ही आप कंडक्टर के अंदर चार्ज देंगे द चार्ज विल कम आउट. सो अंदर कोई चार्ज है नहीं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल ऑल्सो बी 0. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन. मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है.
इट ऑलवेज गोज आउटसाइड द कंडक्टर, इज ऑलवेज। यहाँ देखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर जैसे ही चार्ज देंगे इट विल कंडक्ट एंड गो टू द सरफेस। वो कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। इट विल ऑलवेज कम टू द सरफेस। तो अगर अंदर चार्ज नहीं है तो द फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द कंडक्टर इज ऑल्सो जीरो। द फ्लक्स कमिंग आउट, देयर इज नो नेट फ्लक्स, there is no net flux. Flux coming out of the conductor is also zero. थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखिए, अगर यहां पे आई टोल्ड यू व्हाट, कोई भी कंडक्टर होगा तो अंदर चार्ज रहेगा नहीं, द चार्ज विल गो आउटसाइड टू द सरफेस। एंड इफ द चार्ज गोज आउट, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड, तो फ्लक्स भी नहीं है, अंदर फ्लक्स नहीं होगा। सो इफ आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम, फ्लक्स क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर लिया है। प्लीज रेफर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से आप इसके टॉपिक को, ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर। ओके, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और गॉस थ्योरम ने कहा था एंड दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये क्यू क्या है? क्यू इज द चार्ज विच इज रिसाइडिंग ऑन द सरफेस। क्यू इज द चार्ज विच इज रिसाइडिंग ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट इज द क्यू। कोई भी चार्ज अगर आप कंडक्टर पे देंगे इट विल कम आउट टू द सरफेस, राइट। सपोज यू गेव पॉजिटिव चार्ज तो वो सरफेस पे आ जाएगा। सो अंदर चार्ज क्या है? अंदर चार्ज क्या है? इट इज जीरो। अंदर चार्ज जीरो। टोटल सरफेस कहां पे है? चार्ज इज आउटसाइड, राइट। एंड सो आई कैन टेल दैट अगर फ्लक्स अंदर नहीं है सो लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एस वो भी जीरो होना चाहिए। सो ई डॉट डी एस शुड बी, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा आता है, राइट। सो इफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस एंड कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज जीरो, सो थीटा कितना हो गया? पाई बाई टू। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो नहीं है लेकिन बाहर तो है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, डीएस इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बाहर नहीं हो सकता है। डीएस विच इज द एरिया, ये भी जीरो नहीं हो सकता है। सो जीरो होने का चांस किसका है? ओनली कॉस थीटा, और कॉस थीटा जीरो मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर ये सरफेस है it is perpendicular to the surface. So all electric fields are perpendicular to the surface. Clear? Next, so these are the 3 points. Next, let's move on to the next part. The part 4 says electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as on its surface. So देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? दिस इज अगेन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, है ना, dv बाई डी आर। तो अगर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv बाई डी आर इज जीरो। दैट मीन्स द पोटेंशियल, तो किस चीज के का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही जीरो हो सकता है। सो व्हाट्स इट? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है इनसाइड, इसका मतलब है पोटेंशियल इज कांस्टेंट ओवर दैट सरफेस। पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिएटिंग आउटवर्ड्स, तो पोटेंशियल इस सरफेस में क्या हो जाएगा? इट विल बी कांस्टेंट। दैट मीन्स पूरे सरफेस में पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पूरे सरफेस में यहां पे total potential will be constant, right? Potential will be constant. Next, 5th point, it says electric field at the surface of a charged conductor is, देखिए electric field क्या होता है? We know that for any conductor, already we have done in the electric field chapter, it is
for any thin sheet it is sigma by epsilon, or it is for a thick sheet. कोई भी thick sheet, for example, if this is a thick sheet, and charge positive with charge density sigma, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी sigma by epsilon O, right? Now if sigma is positive, that means sigma greater than 0, मतलब चार्ज क्या है? पॉजिटिव. तो E is directed perpendicularly out of the surface. तो यहां पे देखिए E will be out of the surface. And if sigma is less than 0, मतलब चार्ज क्या दिया है मैंने? नेगेटिव चार्ज. इस शीट में क्या चार्ज दिया है? नेगेटिव चार्ज. सो E will be perpendicular into the surface. तो यहां पे देखिए अगर नेगेटिव चार्ज होगा E will be perpendicular into the surface. And if इस सरफेस को पॉजिटिव चार्ज दिया है तो E will be perpendicular out of the surface. The arrows are very important. Please make sure कि आप arrows को नोट करें. Arrows here, if it is a positive charge, this is the arrows coming out. ये देखिए, these are the arrows coming out. And if it is negatively charged, these are the arrows which is going in. These are the arrows which is going in. If it is negatively charged, these are the arrows which will go in. Clear? Next हम लोग क्या देखेंगे? Next we will see कि the 6th point, surface charge density of is different at different points. तो देखिए सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज बाई एरिया. तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब जितना एरिया छोटा होगा उतना चार्ज का डेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर. दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज इज मोर एट शार्प पॉइंट्स. मतलब अगर ऐसा कोई फिगर है and I have charged it positive, तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा. All positive charges will be concentrated at this point, क्योंकि शार्प एंड्स में चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स सी. The topic next is what we are studying is electrostatic shielding. Electrostatic shielding. Shielding का मतलब है protecting some, suppose some conductor, protecting a conductor so that it does not get any electric field. Protecting a conductor so that it does not get any electric field. तो यहाँ पे देखिए, suppose this is a conductor. यहाँ देखिए, suppose this is a conductor. ये फिगर ए एंड फिगर बी, मैं शील्डिंग समझा देता हूं. दिस इज अ कंडक्टर, सो इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा. द मोमेंट इट टचेस द कंडक्टर, हमने ये भी पढ़ा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. तो देखिए एवरीवेयर इट इज एंटरिंग द सर्फेस, इट इज परपेंडिकुलर. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स which are entering the surface perpendicularly. तो यहाँ negative charge induce होगा, यहाँ positive charge induce होगा, and again electric field will continue. मतलब we can tell that the electric field is which is hitting the conductor is being conducted away. मतलब इस body के through से conduct हो रहा है. Right? Now what we do? We earth this part. We do the earthing. तो ये जो सारे अर्थिंग मैंने किए हैं, सो ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट गोज टू द अर्थ. दैट मीन्स अब देखिए, अब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट नहीं कर, इसके थ्रू से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट नहीं कर पाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड शील्डिंग. दिस इज कॉल्ड शील्डिंग, राइट? दैट मीन्स अगर लाइटनिंग हुआ so some charge will be falling on the conductor, some charge falls on the conductor, लेकिन कंडक्टर के ऊपर लाइटनिंग गिरेगा and electric field will also be coming on to the conductor. It will
हैम्पर द कंडक्टर इन नो वे, कोई भी डैमेज नहीं हो पाएगा कंडक्टर को, बिकॉज यहाँ आपने शील्डिंग कर दिया है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो लाइटनिंग अगर इस कंडक्टर के ऊपर गिरेगा भी तो नथिंग विल हैपन, राइट. तो ये बॉडी क्या है, ये क्लोज्ड बॉडी है, ये क्लोज्ड बॉडी होना चाहिए, याद रखिए, दिस बॉडी शुड बी क्लोज्ड. So the electrostatic shielding, what is it, has been used in protecting sensitive instruments from outside electrical influence. That means sensitive instruments, for example, देखिए suppose आपका ये कार है, suppose ये कार है, अगर during lightning and thunderstorm, ठीक है, अगर आप अपने कार के अंदर ही हैं, if you are inside the car fully locked, पूरा लॉक कर दिया है सब तरह से, तो it is a closed body. तो इसमें क्या होगा, इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स योर कार, सो नथिंग विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कार के अंदर से पास नहीं कर पाएगा, राइट. सो दैट इज व्हाई वी टेल दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग इट इज सेफर टू बी इनसाइड ए कार देन टू बी आउटसाइड. कार के अंदर रहिए, सेफर टू बी इनसाइड ए कार, राइट. इट इज सेफर टू बी इनसाइड ए कार. सो नेक्स्ट, सी फ्रेंड्स, इट इज, यहां देखिए, so as I was telling you that अगर आप, if you are inside a car within in case of a thunderstorm, तो क्या होगा कि your whole car will be shielded and there will be no electric field passing through inside the car, right. So that is why electric field inside a conductor is always zero. ये importance है, right. So if you can keep anything outside, any electrical instruments outside, so if you can keep it in a closed container, then you will see that it will be fully protected, as no electric field will be passing through inside the conductor, right. Next is electrical capacitance. What is the electrical capacitance? It is the ratio of the charge to the rise in the potential. It is the ratio of the charge to the rise in the potential. देखिए ये है capacitance. This is the electrical capacitance. This is the electrical capacitance. The charge to the potential. Right? So now, if I tell V is 1, तो C क्या हो गया? C is Q. So I can tell that the capacitance is the charge when the rise in potential is unity. जब rise in potential को 1 कर देंगे, जब इसको 1 कर देंगे, so the capacitance will be the charge, right. Next is SI unit of capacitance. तो capacitance कैसे मापेंगे? It is the charge by potential, that means coulomb per volt, ये रहा coulomb per volt, and we also tell that is farad. Coulomb per volt को क्या बोलते हैं? farad. And remember, 1 microfarad is 10 to the power minus 6 farad. 1 millifarad is 10 to the power minus 3 farad. Right? Dimension of capacitance is this. M minus 1, L minus 2, T4, A2. A क्या है? Ampere, T time, L length, M is the mass. Next is capacitance of an isolated spherical conductor. ये मेरा spherical conductor है, याद रखिए, this is a conductor. Whenever I say the word conductor, इसका मतलब है कि if I charge it inside, the charge will move to the surface. ये याद रखिए. If I charge it inside, charge will move to the surface and there will be no charge inside. Clear? So let's say that the spherical conductor is of radius r, जिसको मैंने charge दिया था q. So the q will move to the surface. So now we already know potential का formula क्या होगा? Potential is q by 4 pi epsilon r. We already did in the potential chapter. Please refer to the potential chapter, chapter number 3. Chapter number 3 is the potential chapter. वहां से ये formula आपको मिलेगा. So potential at a distance of r due to a charge q क्या होगा? q by 4 pi epsilon r. And then the capacitance will be q by v. So q by the potential q कट गया. So it is 4 pi epsilon r. So we can see that the capacitance of a spherical conductor is directly proportional to the radius of the conductor.
ठीक है, तो रेडियस ऑफ द, जितना आप बड़ा स्फीयर लेंगे यू कैन स्टोर मोर चार्ज. दैट इज वाई Earth as we know is a huge radius. So that means limitless amount of charge can be stored in the earth, right? That is why we do earthing. ये earthing क्यों करते हैं? Because we can send limitless charge to it, because earth का radius बहुत बड़ा है and capacitance is proportional to the radius, so we can store limitless amount of charge inside the earth. तभी हम लोग अर्थिंग करते हैं. नेक्स्ट लेट अस सी, द टॉपिक सेज वी आर नाउ इनटू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? सो लेट्स सी. हियर वी हैव टेकन अ पैरेलल प्लेट. ये आपको दिख रहा है पैरेलल प्लेट. ईच प्लेट इज ऑफ एरिया ए. ईच प्लेट इज ऑफ एरिया ए. और सपोज हमने प्लेट्स को पॉजिटिव चार्ज दिया है, सो सी हाउ द पॉजिटिव चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. ये नेगेटिव हो जाएगा and this positive is earthed, right? Let the distance between the two plates be d and let the charge density be sigma. तो sigma क्या है? Charge density which is q by a. q क्या है? The charge given to the plates. The charge given to the plates, right? इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओ फॉर अ थिक प्लेट. वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर अ थिक प्लेट. ये सारे क्या है? दीज आर ऑल थिक प्लेट्स. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओ व्हिच इज दिस. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल टू, वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई D. तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? E इंटू डी. E into D, which is this is the potential between the plates. And charge we already know, it is Q by C. Capacitance we already know, it is Q by V. So here are Q, here are V, so Q and Q will cut, and this is the capacitance of a parallel plate capacitor. This is the capacitance of a parallel plate capacitor. ये epsilon O का मतलब क्या है? This is इन वैक्यूम, मतलब अंदर अगर हम कोई भी मीडियम नहीं रखें इन वैक्यूम, सो इट्स पर, दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम विच इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, है ना? ये इसका वैल्यू है. इट इज इन वैक्यूम. अगर हम अंदर वैक्यूम रखें, सो दिस इज द कैपेसिटेंस. सो सी, डिस्टेंस जितना कम रखेंगे उतना हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा. एरिया जितना ज्यादा रखेंगे उतना कैपेसिटेंस हमारा और बढ़ेगा. सो हियर वी कैन टेल दैट C proportional to area of the plates and C inversely proportional to distance between the plates. Clear? Next, let us see. If a material of dielectric, अब suppose पहले तो यहाँ पे वैक्यूम था. Now if I put inside a material of dielectric constant कितना? K. Dielectric constant K मतलब ऐसा है कि if I put inside the plates, पहले तो वैक्यूम था, this is positive charge, this is negative charge, right? And now if I put a material, इसके अंदर एक मटेरियल मैंने डाल दिया है, पूरा फिलअप कर दिया है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. सो देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K. सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस? तो ये रहा कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू जैसा आपको दिख रहा है. द कैपेसिटेंस ये वैल्यू हो जाएगा, दिस इज द K into the epsilon O A by D. मीन्स जो भी वैक्यूम में कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो जाएगा, उसका K टाइम्स. So I can tell that the capacitance, है ना, will increase if you introduce a dielectric medium within the plates. कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा. right?
सो कैपेसिटेंस इन द मीडियम, इफ आई इंट्रोड्यूस अ मीडियम, तो वो क्या होगा, के एप्सिलॉन ओ ए बाई डी. एंड कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम, उसका फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन ओ ए बाई डी. ये पूरा कट जाएगा, राइट, दिस ऑल विल कट आउट, सो इट इज के. एंड दिस इज व्हाट इज रिटन, K is also the ratio between the capacitance in the medium to the capacitance in vacuum or air. ये भी K का एक फॉर्मूला है. क्लियर? सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट इज देयर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, मतलब C निकालिए, ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया. दिस इज गिवन separated by 2 millimeter thick glass sheet of K given, right? That means हमने अभी पढ़ा है that here inside it a medium of glass sheet has been introduced. तो क्या होगा, C will be K epsilon OA by D. So let us calculate K कितना है, K is 4, epsilon O is 8.85 into 10 to the power minus 12. ठीक है, एरिया कितना होगा, देखिए एरिया, लेट मी कैलकुलेट द एरिया हेयर. एरिया विल बी 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट. सो दिस इज 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमको तो मीटर स्क्वायर में लेना है, तो मीटर स्क्वायर में लेना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 मीटर स्क्वायर. ये 1 मीटर स्क्वायर, दिस वी विल पुट हेयर बाई डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, बस इसको तो लेना है हमको मीटर में, 10 to the power minus 3, राइट. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 70 एंड दिस इज 9.70 into 10 to the power minus 9 farad. This is the answer of this, minus 9 farad, right? चलिए next, let us see the next question. A capacitance of 10, ये मेरा C दिया हुआ है, is this when air, अंदर air रहेगा, so this is capacitance in air, that means C0. And now when I replace it with another inside with a plate, it is replaced by a slab of dielectric constant 2. What is the capacitance of the conductor? तो मैंने कहा था capacitance, we know it is the capacitance in the medium by the capacitance in the air or vacuum. Okay, तो capacitance in the medium क्या हो जाएगा, वो K times हो जाता है in air or vacuum. So capacitance क्या हो जाएगा, it is 2 into 10 to the power minus 6 farad, means I can tell this is 10 into, sorry, this is 1 minute. Okay, so this I can write as 10 माइक्रोफराड, मतलब ये हो जाएगा 20 माइक्रोफराड. ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस इन द मीडियम. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स सी. इन दिस पार्ट वी विल बी नाउ डिस्कसिंग very very important topic, that is we will be discussing here spherical capacitors. मतलब ये देखिए, this is a sphere, concentric sphere, अंदर hollow है और ये solid conducting part है, right? So here what we are doing is we are initially charging the inside part of the sphere with a charge plus Q. तो क्या होगा, जैसे ही हमने चार्ज किया, इलेक्ट्रिक अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं, द चार्ज विल रिसाइड टू द सरफेस. तो ये देखिए प्लस क्यू चार्ज जो है, स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर ए एंड स्फीयर बी ऑफ रेडियस आर बी, स्फीयर बी ऑफ रेडियस आर बी, स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर ए.
तो टोटल चार्ज कहां पे रिसाइड कर गया, ए के सरफेस पे, और इस पॉजिटिव सरफेस ने यहां पे नेगेटिव इंड्यूस किया और नेगेटिव ने बाहर पॉजिटिव इंड्यूस किया जो कि अर्थ हो गया। तो बाहर देयर इज नो चार्ज, ओनली द चार्ज इज हेयर। तो इसका मतलब देखिए आप, दैट मीन्स फ्रॉम द सेंटर एक सरफेस है टू द सरफेस ऑफ ए और एक है टू द सरफेस ऑफ बी, राइट। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द, what is the potential at the surface A? तो potential at the surface A क्या होगा, potential at the surface A, देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, जैसे one charge is plus at the surface of A and one is a minus at the surface of B. तो total potential at A will be Q by 4 pi epsilon RA minus Q by 4 pi epsilon RB, राइट। माइनस, यहां पे माइनस क्यों आया, बिकॉज बी के सरफेस में नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज माय नेट पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल कंडक्टर, राइट। अब यहां पे देखिए पोटेंशियल एट बी वो क्या आ रहा है, दैट इज जीरो, राइट। ए सरफेस में दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल आएगा, एक तो प्लस क्यू के लिए आएगा और एक माइनस क्यू के लिए आएगा। बी सरफेस को हमने अर्थ कर दिया है, दैट मीन्स इट्स पोटेंशियल विल बी जीरो। सो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द स्फीयर, ये होगा, यही होगा। एंड चार्ज इज क्यू बाई द पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा, इट कट्स, एंड दिस इज द आंसर फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। दिस इज द आंसर फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ये स्फेरिकल कंडक्टर का एक कैपेसिटेंस, दैट इज बेसिकली अ शेल। एक शेल का जिसका इनर रेडियस आर ए, आउटर रेडियस आर बी है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर ए आर बी बाई आर बी माइनस आर ए। नाउ इफ इट इज अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, तो देखिए हॉलो सिलेंडर जिसका इनर रेडियस आर ए, आउटर रेडियस आर बी, इट हैज बीन चार्ज प्लस क्यू, तो सेम होगा। रिमेंबर इट फॉर्मूला विल बी, कैपेसिटेंस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर विल बी 2 पाई एप्सिलॉन एल बाई लॉग ई आर बी माइनस आर बी बाई आर ए, राइट। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ लेंथ एल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, देख लीजिए। नेक्स्ट let us see कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएं तो क्या होगा, सो वॉच हियर। देखिए सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे लगा हुआ है, दिस इज अ प्लेट, हाउ दे आर कनेक्टेड। देखिए ये वाला जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है एंड ये वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, विच इज अर्थ। दैट इज पोटेंशियल हेयर इज जीरो और यहाँ पे प्लस भी होगा। सो सी ये प्लेट पॉजिटिव, देन दिस प्लेट, इसका जो नेगेटिव है ये इसमें इंड्यूस करेगा, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, सो दिस पॉजिटिव कंटिन्यूज, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो यहां पे क्या होगा, अगेन दिस पॉजिटिव कंटिन्यूज। तो इस तरह से कनेक्शन देखिए। सो दिस इज माइनस चार्ज, सो दिस इज कॉल्ड द series connection of the capacitance. So let the charge which is flowing into the series connection be Q. उस चार्ज को लेते हैं Q and the potential applied across all the three capacitors be V. इन तीनों के बीच में पोटेंशियल कितना लगाया है, that is V. And we have connected three capacitors. So let the capacitances be C1, C2 and C3 and charge which is flowing is Q. So see, same charge flows through all the capacitors. याद रखिए, in series the charge remains the same. In series charge remains same. सब में charge same जाएगा. Potential gets distributed. Potential gets distributed. Series में याद रखिए, potential
डिवाइड होता है. तो फर्स्ट में लेट इट बी V1, देन V2, देन V3. Potential will get distributed. Charge same, potential distributed. So see here. So the potential of the first one will be Q by C1, then Q by C2, then Q by C3. And if I add, we know total V is V1 plus V2 plus V3. So total V क्या होगा? Total V is total charge by total capacitance. Total V is total charge by total capacitance. And V1, V2, V3 में से इसको पुट करेंगे तो Q कॉमन, Q cuts this. So this is the formula for the net capacitance of 3 capacitors connected in series. तो ये n capacitors होगा तो ये और चलता जाएगा. This is the formula for connecting capacitances in series. Okay. Next, let us see capacitance connected in parallel. यही दो हमारे सिलेबस में है. So watch here how the capacitances are connected in parallel. देखिए, सबका पॉजिटिव प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है एंड सबका नेगेटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है. So here what happens? See, everybody is connected directly to the battery's positive, battery negative. Means they all will have the same potential. तो यहाँ पे देखिए सीरीज पैरेलल में क्या होगा? V remains constant. V कांस्टेंट होगा. V को सीरीज में V डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड पैरेलल में V इज कांस्टेंट. बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स, याद रखिए चार्ज जो Q होता है दैट डिस्ट्रीब्यूट्स. सो सी हियर, अगर चार्ज यहां से निकला है Q, सो हियर इट विल गो Q1, हियर इट विल गो Q2, here it will go Q3. So I can tell Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Q is the total charge, which is the total capacitance into the total potential. Total capacitance in तीनों का मिला के into the total potential. So this will be C1V, C2V, C3V, because उनका sum का potential same होता है, तो V cuts. So C equal to C1 plus C2 plus C3. That means this is the net capacitance in parallel. This is the net capacitance in parallel, right? So watch करिए, net capacitance in series का formula ये रहा and net capacitance in parallel का formula ये रहा. So let's now move on to the next part. There are 3 capacitors, 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad joined in series. How many times will the capacity become when they are joined in parallel? तो first of all देखिए, when they are joined in series हमको पता है कि net capacitance 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. तो 1 by C is equal to, this is 6 plus 3 plus 2. So 1 by C is equal to 11 by 6. Therefore C क्या होगा? It is 6 by 11 microfarad. This is the net capacitance. Now when they are joined in parallel, C क्या होगा? C dash क्या होगा? It is C1 plus C2 plus C3. तो C dash यहाँ पे मैं सीरीज का S ले लेता हूँ, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज, एंड नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल को मैं CP ले लेता हूँ. सो इट इज कमिंग 6 माइक्रो फैराड. सो हाउ मेनी टाइम्स हैज इट इंक्रीज? टू लेट्स सी. CP by CS is 6 by 11, which is 11 times. 11 times बढ़ गया. मतलब the capacitances which I connected in series, उसका जो value आया है, and the capacitances which I connected in parallel, तो parallel का connection will become 11 times than the series connection, right? So we have seen what is the total capacitance, and we have found out how to find out the capacitance in series and in parallel. So energy stored in a capacitor. So let us find out what is the energy stored in a capacitor. तो देखिए ये कैपेसिटर है, प्लस प्लेट माइनस प्लेट,
तो वी हैव गिवन प्लस चार्ज माइनस चार्ज एंड वी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, positive plate to negative plate. Now what happens? We know that if I move, already we have discussed that potential का formula क्या होता है, it is the work done per unit charge. Okay, तो work done क्या होगा, potential into the charge, potential into the charge. So पोटेंशियल वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू द चार्ज, राइट. सो सपोज आई वांट टू सेंड आई वांट टू सेंड, तो पोटेंशियल क्या है, Q बाई C पोटेंशियल, राइट. वी नो Q इक्वल टू C इंटू V, तो पोटेंशियल क्या होगा, इट इज Q बाई C. तो यहां पे हमने लगाया है Q बाई C इज द पोटेंशियल. इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल टू Q by C, and if I want to move a small charge dq, तो work done क्या होगा, this is the work done. So what is the work done if I want to send total charge Q from this place to this place? इस प्लेस से इस प्लेस में टोटल चार्ज को सेंड करेंगे, व्हाट इज द वर्क डन, और जो वर्क डन होगा दैट इज स्टोर्ड एज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. सो लेट्स सी. So total work done will be integration of total dW. So जीरो से लेके फुल चार्ज को भेजेंगे तो कितना वर्क डन होगा. So इंटीग्रेशन इसको कर देंगे. So 1 by C is constant. This comes out to be Q square by 2. So एक बार Q बैठाएंगे, एक बार जीरो बैठाएंगे. So this is the formula for the energy stored inside a capacitor of charge Q. Right. Now this is the energy stored in the capacitor, Q square by 2C. Now we know Q equal to C into V, तो C square V square by 2C, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, CV square by 2. Again we know that Q by C क्या होता है, Q by C क्या होता है, V होता है. देखिए Q by C, what is happening, this is Q by C, वो क्या होता है, V होता है. So 1 Q by C is V, और एक और Q रह गया, so this is Q into V. तो ये भी एक फॉर्मूला, मतलब देर आर थ्री फॉर्मूलाज फॉर द एनर्जी को अगर हम लोग यू दिखाएं सपोज, सो वन इज हाफ CV स्क्वायर, और एक क्या है Q स्क्वायर बाई 2C, और एक क्या है Q इंटू V बाई 2. So these are the three formulas for the energy stored in a capacitor. Clear? Let us move to the next part. So the next part says calculate the energy stored in a capacitor of 5 microfarad when it is charged to potential. तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या दिया है, they have given us the charge and they have given us the voltage. तो हम क्या करते हैं, energy is half CV स्क्वायर, इसको यूज कर देते हैं. सो हाफ इंटू व्हाट इज C, 5 इंटू 10 to the power minus 6 इंटू व्हाट इज V, 250 का स्क्वायर, राइट. सो इट इज 5 इंटू 10 to the power minus 6. 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, 625, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा by 2. So this will be how much, 25 का 5 carry 2, 12 का 2 carry 1, 3125 by 2 into 10 to the power minus 4, which is coming 1562.5 into 10 to the power minus 4 joules. This is the energy stored inside the capacitor, right? In series combination, the total energy stored is, add करते रहो. Please make sure
that in series combination we use the formula q square by 2c. तो यहाँ तो q कांस्टेंट रहता है, सबके अंदर चार्ज सेम रहेगा. सो वी फाइंड आउट द कैपेसिटेंस q स्क्वायर बाई 2c. हर एक का चार्ज तो q रहेगा. सो वी विल नाउ देन यूज द फॉर्मूला दिस एंड एड इट अप. पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो द v इज कांस्टेंट, तो सबका एनर्जी निकालिए और ऐड कर दीजिए. So make sure you take V when you take the parallel combination and you take Q when you take the series combination, right? Next is energy density. It is energy by the volume of the capacitor. Energy and the volume is area into the gap of the plates. So here are मेरा energy and this is the volume. So from here देखिए C का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन ओ A बाई डी. तो A कट्स, इट कम्स आउट टू बी दिस. नाउ इन प्लेस ऑफ V आई कैन पुट E इंटू डी, तो E स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर भी कट्स आउट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. सो लेट्स सी now the next part, which is so here see, find the common potential of two capacitors on sharing charges. Find the common potential. क्या निकालेंगे? The common potential. So see, here is the capacitance जिसका इसके अंदर चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 एंड पोटेंशियल V1. इसका चार्ज Q1, दिस इज वी आर टेकिंग, यस, एंड पोटेंशियल V2. सो सी टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, जब मैंने इनको अलग अलग रखा तो व्हाट इज द टोटल चार्ज C1 V1, इट इज Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, इसको Q2, इसको ये Q2 होगा, Q1 प्लस Q2. So total charge before sharing is this. Now after connecting them, देखिए इसको मैंने अब लगा दिया है पॉजिटिव प्लेट. So this is positive plate, negative plate. So now after connecting them to the common potential V, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, in the common potential V, what is the total charge? यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट, पोटेंशियल तो सेम रहेगा दोनों का, तो यहां पे चार्ज क्या होगा, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. सो दिस इज माय टोटल चार्ज, बट चार्ज हैज टू बी सेम. चार्ज हैज टू बी सेम क्योंकि खाली मैंने उनको कनेक्ट कर दिया है, एक सेपरेट था, अब एक साथ कर दिया है. तो टोटल चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर्स विल बी दिस, लेकिन पहले टोटल चार्ज इतना था. सो नाउ as charge is conserved, हमने इसको ऐसे कर दिया, this is the charge before when they were separate and this is the charge when they were connected. तो यहां से मेरा common potential मिल गया है. So this is how we find what is the common potential in which they are connected. Next see, dielectric strength. Dielectric strength. What is dielectric strength? Suppose करिए this is my parallel plate. This is my parallel plate. एक का चार्ज प्लस किया हुआ है और एक का चार्ज माइनस किया हुआ है, right? So what is dielectric strength? The maximum electric field that a dielectric can withstand without breaking down of its insulating property is called dielectric strength. इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो मीडियम हमने डाला है, वी आर पासिंग द करंट थ्रू दैट, राइट? ये करंट हम लोग पास करेंगे इसमें से एंड वी विल सी दैट एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनसाइड ऑफ दिस विल ब्रेक डाउन. द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा. तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसी को बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. क्लियर? नेक्स्ट इज
कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। तो जहां पे देखिए दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया है। देखिए दिस इज द कंडक्टिंग स्लैब लिखा हुआ है, एंड कंडक्टिंग स्लैब में क्या होता है, चार्ज अंदर नहीं रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इफ दिस इज पॉजिटिव तो यहां पे वो कंडक्ट करेगा, नेगेटिव फील्ड बना देगा, फिर यहां पे पॉजिटिव, फिर यहां पे नेगेटिव, शील्डिंग में आपने देखा है, फिर यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर यहां पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। सो लेट अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी बी इंट्रोड्यूस्ड। तो अब देखिए द कैपेसिटेंस when no medium was the capacitance when no medium capacitance when so electric field see for the part of the vacuum, अगर आप यहां देखें for the part of the vacuum, 1 minute, yes, see for the part of the vacuum हम जाते हैं कि इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस होता है व्हेन इट इज अ वैक्यूम देन द कैपेसिटेंस इज E0 इक्वल टू एप्सिलॉन OA बाई D। A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। व्हेन अ कंडक्टर स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस T, ये देखिए area will be same, ये area will be same but thickness will be T is introduced within the parallel plates। तो देखिए ये वाला पार्ट जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज वैक्यूम, और जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज द मीडियम। तो कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है, टोटल चार्ज विल गो आउटसाइड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो, ठीक है। तो टोटल, तो अगर इस T पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो D माइनस T पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। सो वी कैन टेक द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E0 इंटू D माइनस T। एंड व्हाट इज E0? E0 विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ऑलरेडी हम आपको बोल चुके हैं कि फॉर अ शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन O, राइट, फॉर अ थिक शीट। तो यहां पे देखिए E0 विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन O इंटू D माइनस T, एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी Q बाई A। तो ये होगा आपका पोटेंशियल विद इन द स्पेस आउटसाइड द कंडक्टिंग मीडियम। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस विल बी Q बाई V। तो ये रह गया आपका Q बाई V, तो Q कट जाएगा। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिस अगर आपका कंडक्टिंग मीडियम ऑफ थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस्ड तो द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस। सो सी इफ आई कंपेयर दिस फॉर्मूला विद दिस, सो डेफिनेटली देखिए कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हुआ है, द कैपेसिटेंस इन द मीडियम, द कैपेसिटेंस यूजिंग द मीडियम विल बी व्हाट, इट हैज इंक्रीज्ड, है ना। So this I can write like this, that means इस D को ऊपर ले गए A by D and this is C0, this is C0। so देखिए कैपेसिटेंस ड्यू टू द मीडियम अब कितना हो गया, C0 by 1 minus T by D। now if the material which is put inside conducting slab अगर वो टोटल फिलअप हो जाए तो T will be equal to D। सो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इन 0। सो द कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम, कैपेसिटेंस यूजिंग द मीडियम विल बिकम इनफाइनाइट। तो देखिए अगर हमने एक कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T डाला है तो दिस इज द कैपेसिटेंस, राइट। और वो कंडक्टिंग मीडियम अगर इट फिल्स अप द होल स्पेस, दैट मीन्स इक्वल टू D, T इक्वल टू D, इट फिल्स अप द होल स्पेस, तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली क्या था, अगर आप प्रीवियसली देखें
तो इफ यू सी विथ अ कंडक्टिंग स्लैब, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये नोट करना चाहिए। वी आर यूजिंग अ कंडक्टिंग स्लैब हियर, कंडक्टिंग स्लैब। तो फिर ये आपका जो है दैट इज द, और डायरेक्टली यू कैन थिंक लाइक दिस कि ये आपका जो है वो कैपेसिटेंस हो जाएगा। एंड इफ यू इंसर्ट इनसाइड अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, तब क्या होगा, देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में आप अगर यहां से देखिए इट इज ऑफ थिकनेस T, राइट। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में देखिए हाउ इज द चार्ज बीइंग डेवलप। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा स्लैब के अंदर उल्टा काम करेगा, उल्टा काम करेगा, राइट। तो बाहर है E0, डायरेक्शन देखिए, और इस पार्ट में EP ऊपर की तरफ ऑपोजिट। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड E0 माइनस EP? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी E0 माइनस EP। ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। फिर देखिए बाहर आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक इट इज अगेन E0, राइट। सो व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट वाज द कैपेसिटेंस? एप्सिलॉन OA बाई D। अब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाल दिया है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो तब देखिए क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी दिस मच, E0 D माइनस T। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, E इंटू T। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, E इंटू T, राइट। सो हियर वी वांट टू शो यू दिस E, ये जो अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट रिड्यूसेस K टाइम्स, प्लीज माइंड इट, it reduces K times. Dielectric field inside and the electric field inside a dielectric medium क्या होता है, वो रिड्यूस करता है। तो इस E के बदले E0 by K, E0 कॉमन, and E0 is sigma by epsilon हो, already we know that sigma is Q by A। तो यहाँ तक आपका हो गया। तो what is the capacitance? Q by V। तो Q बाई ये V कर देंगे तो Q कट जाएगा, दिस इज द कैपेसिटेंस, राइट। नाउ व्हाट वी आर अरेंजिंग, देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे, D माइनस T माइनस 1 बाई K, दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो देखिए द डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, जब वो वैक्यूम में था, व्हाट वाज द कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन OA बाई D। और अब क्या हो गया, देखिए वो D से कम हो गया, दैट मीन्स द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब और अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दोनों का हमने देखा है। कंडक्टिंग स्लैब में भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, राइट। नाउ वॉच हियर, हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब? देयर आर टू मेथड्स। वन, जब बैटरी पैरेलल प्लेट के साथ कनेक्टेड हो और जब बैटरी पैरेलल प्लेट के साथ कट ऑफ हो। बैटरी पैरेलल प्लेट के साथ कनेक्टेड हो, यहां पे देखिए दिस इज द पैरेलल प्लेट एंड दिस इज द बैटरी, दिस इज द बैटरी विच इज कनेक्टेड। और हम क्या कर रहे हैं, विद द बैटरी कनेक्टेड we are introducing a parallel slab, we are introducing the conducting slab inside। इसके अंदर हम लोग conducting slab को इंट्रोड्यूस करेंगे और यहां क्या करेंगे, पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस द कंडक्टिंग स्लैब। इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब को उसके बाद डालेंगे, वी विल इंट्रोड्यूस द कंडक्टिंग स्लैब आफ्टर दैट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखिए
तो ये क्या है, विद द बैटरी स्टिल ऑन मैं अंदर कंडक्टिंग स्लैब डालूंगा। तो याद रखिए पोटेंशियल फिर भी वही रहेगा बिकॉज बैटरी इज नॉट चेंज, पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। वो पहले जो था स्लैब डालने के बाद भी पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डेफिनेटली कैपेसिटेंस विल बिकम k टाइम्स, राइट। चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज भी बढ़ेगा क्योंकि Q इक्वल टू C इंटू वी, C इंटू वी। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज को भी बढ़ना पड़ेगा, तो चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओ विच इज Q बाई एप्सिलॉन ओ A। नाउ हियर व्हाट हैपेंस, जब याद रखिए when the potential remains constant, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा when you introduce a dielectric slab. When you introduce a dielectric slab, electric field decreases. तो potential constant, capacitance increases, charge increases, E decreases and energy increases. तो एक चीज खाली याद रखिए कि E decreases. तो what is happening here? V constant हो गया, V constant, C increases, Q increases, energy increases, electric field decreases. ये होता है. Now when you come introduce a dielectric slab with the battery connection off, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल याद रखिए, यहाँ पे what is happening here is potential, ये डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा लाइक द प्रीवियस, चार्ज इंक्रीज करेगा लाइक द प्रीवियस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एंड एनर्जी also decreases. Only thing is that capacitance will increase. याद रखिए, तो यहाँ only electric field decreases, यहाँ क्या होगा, only capacitance increases, right? This is the only difference between the two. तो जब बैटरी लगा हुआ होगा, आप you are introducing a slab, remember only electric field decreases, others increase. And when battery is disconnected and you introduce a slab, तो what happens, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, बाकी सब डिक्रीजेस. तो यहाँ पे E, यहाँ पे C, ये डिफरेंस होगा, राइट. यहाँ पे E डिक्रीजेस, यहाँ C इंक्रीजेस. नेक्स्ट, lightning conductors. So see, we all know that in buildings we have lightning conductors. Lightning conductors के ऊपर क्या होता है, sharp edges होता है. ये देखिए sharp edges over lightning conductors, right? We know that charge density is sigma is Q by, it is the charge per unit area, right? So for a sphere it is 4 pi r square. तो देखिए जितना r छोटा होगा उतना ही चार्ज का कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होगा, राइट. सो if a conductor has this shape and if a conductor has this shape, यहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज होगा बिकॉज यहाँ पे एरिया सबसे कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, राइट. नाउ सपोज देयर इज अ नेगेटिव क्लाउड पासिंग ओवर द बिल्डिंग. तो नेगेटिव क्लाउड क्या करेगा, इट विल इंट्रोड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज ओवर द शार्प एजेस ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर. It will induce a positive charge over the sharp edges of the lightning conductor. ठीक है, और ये sharp edges क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो it will induce negative charge, और वो negative charge ये कंडक्टर lightning conductor जो है, this is the lightning conductor, it will straight away conduct to the ground. बिल्डिंग में कोई इफेक्ट होगा नहीं. So this is the concept of having lightning conductors with sharp edges.
Clear? Next, let us see. We are learning the Van de Graaff generator. We are learning the Van de Graaff electrostatic generator. तो देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज अ कंप्लीटली सील्ड चेम्बर, राइट. ये एक हाई टेंशन वायर है जो हाई टेंशन बैटरी है, अबाउट मोर देन 1000 किलो वोल्ट. तो यहाँ पे इट्स अबाउट गिवन 1000 किलो वोल्ट. तो यहाँ पे देखिए एक कोम्ब है विथ शार्प एजेस. ये एक रबर का बेल्ट है जो घूमता है. It will spin like this, it will rotate like this, it will rotate like this, and here again there is a sharp edged comb B2, right. यहाँ पे एक आयन का सोर्स है और यहाँ पे एक टारगेट है जहाँ पे हिट करेगा, right. So see what happens. First of all, what is the use of this Van de Graaff generator? It is used to build up high potential. Potential बहुत बड़ा देता है, पोटेंशियल बहुत बड़ा देता है. हाउ मच? फ्यू मिलियन वोल्ट्स. तो उतने हाई वोल्टेज से क्या होता है, सच हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस आर यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस. किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए वी यूज दिस हाई पोटेंशियल, राइट. सो because we know energy is equal to Q into V. तो ये Q क्या है? It is the charge of the either the electron or the proton or any ion into the potential. तो ये potential अगर मिलियन वोल्ट का होगा so obviously देखिए एनर्जी कितना हाई हो जाएगा. The energy of the charge particle will be very very high. ठीक है. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? What is the principle? The generator is based on action of sharp points. देखिए these are the sharp points. B1 यहाँ पे एक है, B2 यहाँ पे एक है. The charge is given to the hollow conductor is transferred to the outer surface, right, and is distributed uniformly. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी चार्ज यहाँ पे जो आएगा that charge is basically distributed into this hollow surface, ये देखिए, right. This is my principle, distributed uniformly through the action of the sharp points. ये रहा sharp points. Now working, this is the first spray comb B1. It is given a positive potential 10 to the power 4 volt by the high tension. ये high tension से पहले B1 को this much voltage is given. अब ये sharp points है तो यहाँ से discharge हो, आराम से discharge हो जाएगा. It is discharged onto the belt which moves the charge up. और जैसे यहाँ पे आएगा it induces negative charge on the comb B2, जो कि इस कंडक्टर के आउटर सरफेस में फिर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, राइट. दैट मीन्स द टोटल पॉजिटिव चार्ज is spread evenly on the outer surface of this hollow conductor, right. और उसके बाद क्या होगा, due to the discharging action of sharp points of B2, a negatively charge is set in the belt which neutralizes the belt. अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो रहा है ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करता रहेगा. सो दिस बेल्ट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड और अगेन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फिर से कैरी होके आएगा. इट विल इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज हियर और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, फिर वहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, इट कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेज इट और ये चलता जाएगा. सो देयर विल बी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बढ़ता ही रहेगा, राइट. सो सपोज द रेडियस ऑफ दिस is R. Suppose the radius of this conductor is R. So what is the capacitance created? 4 pi epsilon R, right. And what is the potential developed? Q by C. ये Q by C. So this is the potential which will be developed at the surface of that spherical conductor. Potential, right. Since lot of charge is coming, so potential will be few million,
ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन वोल्ट के आसपास इसका वैल्यू हो जाएगा, राइट। नाउ इस हाई पोटेंशियल से क्या होता है, वी नो द ब्रेकडाउन फील्ड इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ब्रेकडाउन फील्ड क्या होगा, इसके आसपास का जो एयर है, एयर गेट्स स्टार्ट्स टू आयनाइज, एयर आयनाइज होना स्टार्ट कर देता है। होते 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 जितना पोटेंशियल बढ़ता है, एयर ऑल्सो गेट्स स्टार्ट्स टू आयनाइज मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। नाउ द मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू आ जाए, द मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू आ जाए, तो क्या होगा, ये एयर का इंसुलेशन पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, एयर का इंसुलेशन पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड दिस चार्ज विल गेट डिस्चार्ज्ड, निकल जाएगा, दिस चार्ज विल गेट डिस्चार्ज्ड, राइट। सो दिस इज द थिंग मेनली व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो सपोज मेरे पास एक चार्ज Q है, सो फ्रॉम दिस Van de Graaff electrostatic generator we have developed a potential which is V, which is few million volt. तो उस चार्ज को कितना एनर्जी से एक्सेलरेट कर सकते हैं, दैट इज Q × V। एनर्जी कितना दे सकते हैं, दैट इज Q × V। इस एनर्जी से हम उस चार्ज, बिकॉज V इज वेरी हाई, V इज वेरी हाई, तो हम इस एनर्जी से उस चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, I think we have covered up the basic theory part of the capacitance chapter. Basic theory part of the capacitance chapter has been covered up. We have covered up the full basic theory part of the capacitance chapter. तो अगर आप इस capacitance के chapter को पूरा ठीक से देखेंगे, you will find that the full theory of this has been covered up, right? And after covering up the full theory of this chapter, हम लोग इस चैप्टर का क्या देखेंगे, we will be going through the numericals of this chapter as well. Clear? So friend, let's see the numericals of this now. So first of all, चलिए, let's see what is the first numerical for us. The first numerical says that there is a parallel plate capacitor which has an area of 25 centimeter square. Okay, so देखिए एरिया ये दे दिया है 25 centimeter square means 10⁻⁻4 meter square, correct? Distance between the plates is given 2 millimeter, means 2 × 10⁻³ meter. The capacitor is connected to a voltage which is 12 volt. Find the charge. So we know C is equal to epsilon OA by D, right? C is equal to epsilon OA by D. ये हमको पता है. So let us first find the C, capacitance. This is 8.85 into 10⁻⁻12. Area is given 25 into 10⁻⁻4 by 2 into 10⁻⁻3. So capacitance कितना आ रहा है? 8.85 into 2. So see, this is coming nearly 200 by 2. Nearly 200 से थोड़ा ऊपर आएगा by 2. So it is coming, let me take its 200. Nearly it will come 100. आप प्लीज़ इसको वैल्यू को चेक कर लीजिए, बिकॉज we have to do the calculations. मैं इसके calculations को, let me first do the calculations. So let us do the calculations in a proper way. So it is giving 8.85 into 25 by 2. इसका आंसर आ रहा है 110.1
0.625 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -16 और -3 दैट इज -13 फराड। ये हो गया कैपेसिटेंस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड द चार्ज, व्हाट वी हैव टू फाइंड द चार्ज Q। तो Q क्या होता है, C इंटू V होता है। सो Q इज इक्वल टू 110.625 इंटू 10 टू द पावर -13 इंटू वोल्टेज इज गिवन 12। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, Q, let us see the calculation, 110.625 into voltage is 12, which is coming 1327.5 into 10 to the power -13, right, that is coulombs. नेक्स्ट दे आर टेलिंग, तो ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया है। द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू द बैटरी। अब देखिए, नाउ दे आर टेलिंग व्हेन द प्लेट डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर, डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर, मतलब 2 मिलीमीटर था तो 1 मिलीमीटर हो गया, राइट। तो अगर फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज, सो देखिए अगर we know C, यहां पे देखिए द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर D का वैल्यू हम हाफ कर दें तो C का वैल्यू डबल हो जाएगा, राइट। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि C का पहले D का वैल्यू 1 मिलीमीटर था, अब D का वैल्यू पहले 2 मिलीमीटर था और अब देखिए 1 मिलीमीटर हो गया है। तो वी नो कि अगर हम D का वैल्यू हाफ कर दें तो C का वैल्यू डबल हो जाएगा, तो C विल बी ट्वाइस ऑफ दिस। तो अगर C का वैल्यू ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, राइट, वो भी ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा। देयरफॉर एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ा, पहले था Q अब है 2Q, सो एक्स्ट्रा चार्ज is Q only, that means यही आंसर होगा। So what is the extra charge, ये extra charge क्या होगा, ये Q whose value we have already found out, 1327.5 into 10 to the power -13 coulomb, this is sorry coulomb, this is our answer, clear। Next let us see, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो ये कनेक्शन है, देखिए दिस कनेक्शन सेज दैट 5 माइक्रोफैराड एंड 5, देखिए यहाँ पे वी हैव टू रीड्रॉ द कनेक्शन, वी हैव टू रीड्रॉ द कनेक्शन। देखिए इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं B, राइट, B। सो बैटरी का दो पार्ट है, देखिए बैटरी का दो पार्ट है, 10 वोल्ट का दो पार्ट है, एक है A और एक है B। A से 5 माइक्रोफैराड का एक कनेक्शन जा रहा है, 5 माइक्रोफैराड कनेक्शन इज देयर A से, वन पार्ट, एंड द अदर पार्ट गोज टू B, अदर पार्ट goes to B, other part is going to B. So if we see that between these 2 points, the point A, 1 minute, so see between the 2 points of the battery, that is point A and point B, the 5 microfarad capacitance is connected in parallel, okay। So if this is the 5 microfarad, so suppose this is our potential, suppose this is our potential and this is point A, this is point B, so 5 microfarad is connected
like this, 5 microfarad, clear, which is 10 volt. The battery is 10 volt. Now from the point B, so point B is here, find the point from the point B. There is another capacitance coming out which is 6 microfarad. See, 6 microfarad is also connected to the point A and point B. That means this is also point A and point B. That so I can tell that 6 microfarad is connected like this. 6 microfarad is connected like this. So we can see that these two capacitances are connected in parallel. So what is the net capacitance? The net capacitance will be C1 plus C2. In parallel we have learned, which is 6 plus 5, which is 11 microfarad is my net capacitance. So what is the charge? Charge is C into V. So Q is equal to 11 into 10 to the power minus 6 into potential is given 10. That means Q is coming 11 into 10 to the power minus 5 coulombs. Okay, so this is my charge which is flowing in this circuit, right, which is being supplied by the battery. Next, let us see, this is the connection. So let us name the connection, this part, as A. So we can see between the points A, and let us name this point as B. So first of all, see, let us draw the circuit again. This is point A, point B. So this is the capacitance C2. Now from A, another capacitance is coming out. From A, see, another capacitance is coming out with its plate connected, and the other plate is connected to B. So this capacitance is the C1. This capacitance is the C1. Okay, so from A, see, this one plate is connected of C1 and the other plate is connected at P, which is connected to B, that means this is other plate is connected to B. Now from A, another capacitance is coming out, one plate connected to A and the other plate is connected to B. See, one plate is connected to B and the other plate is connected through Q to A. That means this is the connection. So obviously we can see that this is the parallel connection. So the net capacitance will be C1 plus C2 plus C3. This is the final answer. Okay. Let's see, in this part they are telling what is the capacitance of the combination between A and B. So between A and B, what is the net capacitance? So first of all, see, this 2 and 2 are in series. This 2 and 2 are in series. So what is the capacitance of that part? 1 by 2 plus 1 by 2, which is 2 by 2, which is 1. So therefore C is equal to 1, right? That means instead of these two capacitances, I can draw one capacitance which will be of 1 microfarad. So if I rub this and draw, so let us see, if I redraw it, that means basically this will become 1 microfarad. Correct? Now this 1 microfarad and this 1 microfarad are in parallel. So
the net capacitance of this part will be 1 plus 1, which is 2 microfarad. 2 microfarad. Correct? That means between these 2 points, between the points P and Q, the net capacitance is 2 microfarad. So let us now again make it simpler. That is, let us make this simpler. That means this capacitance net becomes 2 microfarad. This is 2 microfarad. So again see, this 2 and 2, this 2 and 2 again are in series. So that will give me 1 microfarad. So basically that is going to give me 1 microfarad. So let us now remove this part, and in this part so let us first remove this part, and now let us write here that this capacitance's value 2 and 2 gives me 1. Now again see, this one and this one are in parallel, so the net capacitance is 2. Net capacitance 2. So again let us remove this. Again let us remove this. So this capacitance is 2. So let us now remove this part, and we'll name it as 2 microfarad. So this becomes 2 microfarad. So again this is 2 and 2 are in parallel, which makes us calculate and give 1 microfarad. So let us remove it and write this as 1 microfarad. So this is 1 microfarad, and now 1 and 1 makes us 2. 1 and 1 again makes us 2. So this is, again we will remove this part. So this value comes out to be 2. Now this 2 and 2 are in series. That means the net capacitance will be 1 by C equal to 1 by 2 plus 1 by 2, which will give me 2 by 2, which is 1. Therefore the net capacitance C net will be 1 microfarad. This is the answer. Clear? This is the answer. Let's see the next one. It is required to construct a 10 microfarad capacitor. That means we want to make total 10 microfarad capacitor, which can be connected across a 200 volt battery. Okay. Capacitors, they have given us 10 microfarad whose capacity is only 50 volt. So how can you connect them? So they are telling how can you connect them. Each capacitor can have a potential of only 50 volt. Right? So suppose we know that if I connect capacitors in parallel, this is just an example. Suppose if I connect capacitors like this, first they are in row, then they are in series. It's a row series combination. So I don't know how many will be there. I don't know how many will be there. And I don't know how many will be there in this row. That also we don't know. But this will be of 100 volt, 200 volt, that we know, and each one will be of 50 volt each. Each one will be of 50 volt each. So watch, 50 volt each, that means everybody in a row will have a total of 200 volts. So how many capacitors in one row? So number of capacitors in one row should be how much? 200 by 50. That means I can use 4 capacitors, correct? I can use 4 capacitors in a row. That will give me 200.
Now the question is 200 capacitors and total capacitance should be 10 microfarad. So capacitance, total capacitance in one row is how much? 1 by C net will be, it is 1 by 10 microfarad plus 1 by 10, because there are 4 capacitors, plus 1 by 10 and plus 1 by 10, which is 4 by 10, which is 2 by 5. That means C net will be 5 by 2, that means 2.5 microfarad is the capacitance in one row, but in total I have to get 10 microfarad. So how many such rows? In one row there are 2.5. So how many such rows shall I make? Therefore number of rows I have to keep is 10 by 2.5, which is coming 4 rows. That means we have decided then in each row there will be 4 capacitors. In each row there will be 4 capacitors. Total we know that we have to make, total capacitance will be 10 microfarad. In each row there is only 2.5 microfarad. So how many such rows shall I make? That means 4 rows I will make, and in each row there has to be 4 capacitors. That means if I draw, so here the figure will look like this. The ultimate figure will look like this. That means one more I have to draw. And this will be the figure. So each is 10 microfarad and it can take 50 volt. So in total in one row I will keep 4 capacitors. In one row 4 capacitors. And how many rows I will make? I will make 4 rows. I have to make 4 rows. So 1 minute. Let me clear out this thing. So one more row I have to make. So basically there are 4 rows and in each row there will be 4 capacitors. So 1, 2, 3, 4 and this is 200 volt and each one will be of 50 volt. Clear? Next see. So see, there are 4 capacitors here given, C1, C2, C3, C4, values are given here. The question, see the connection, how they are connected. Find the equivalent capacitance between A and B. Equivalent capacitance between A and B. So equivalent capacitance between A and B, so I can easily see that if I draw the figure like this, one minute. Okay. So if I redraw the figure, basically it is looking that this is our point A, this is our point B, this is C1, and between A and B, that means these 3, C1, C2, C3 and C4 will be, this is C2, C3, C4, they get connected in series. That means first let us find out the combination of this.
So 1 by C is equal to 1 by C1 as C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4. That means C2, C3 and C4 all are 9. That is 1 by 9, 1 by 9, 1 by 9. That is 3 by 9, which is 1 by 3. So C is coming 3 microfarad. Okay. So this is 3 microfarad in series. So the connection now looks this is A, B. So this is my C, 3 microfarad, and this is my C1, 3 microfarad, and they are in parallel. So the net capacitance will be adding C1 plus C, which is 3 plus 3, 6 microfarad. This is the answer of the first one. Now the question says, if a 4-volt battery is connected between A and B, if I connect a 4-volt battery, what is the charge stored in each capacitor? So first let us see here. If I connect a 4-volt battery, this is 4 volt. Okay. So what will happen? See, A and B is connected to a 4-volt battery. Clear? That means let us redraw the figure. So this is our A and B. This is 4 volt, 3 microfarad, 3 microfarad. So the question here is, what is the total charge in the capacitor? What is the total charge in the capacitor? So Q, we know the total capacitance. Total capacitance is coming 6 microfarad. So total charge will be C into V, which is 6 into 10 to the power minus 6 into 4, so which is coming 24 into 10 to the power minus 6 coulomb. This is the total charge. Third part says, if the battery is connected between A and D, if I connect a battery between A and D, so what is the total charge stored? So now see. So let me first erase this part. If the battery is connected between A and D, so the total connection we have to show it again in a proper manner. So let's see. Let me first erase this part, and then I can show you the calculations. How we can do the calculations. Okay. So first of all, see, they are telling that you have to connect a battery between A and D. So basically, if I connect a battery between A and D, so see how it looks. If I connect a battery between A and D, so see how it looks. Between A and D, what are the capacitors connected? This is A, this is D. Capacitors connected are C2 and C3, right? And now between A and D, on the other part, capacitance connected is C1 and C4. That means this is C1, C4. So they are telling, if I connect a battery between A and D like this,
If the battery is connected, what battery? It is the battery is 4 volt. If I connect a battery of 4 volt between A and D, so what is happening? So see, C1 and C4 are in series. So 1 by C, 1 by C1 plus 1 by C4, which is 1 by 3 plus 1 by 9, which is coming 4 by 9 this, right? Similarly, between A and D, C2 and C3, 1 by C2, 1 by C3, so 1 by 9 plus 1 by 9, 2 by 9, so C dash will be 9 by 2, right? 9 by 2. So if I connect now between, so there are two capacitances now. Which is 4 volt, and here it will be 9 by 4, and here it will be 9 by 2. So these are in parallel. So what is the total capacitance? So which is 27 by 4 microfarad. Therefore the total charge will be total capacitance into the potential, which is 27 by 9 into 4, so which is coming 108 by 9, so which is coming 12 microcoulombs. This is my total charge stored in the capacitor, right? Total charge stored in the capacitor if the battery is connected between A and D. Clear? So let's see. Here they have given the values of C1, C2, C3, C4, all are 4 microfarad. See, all are 4 microfarad, only C5 is 5 microfarad, and you have connected a battery 10 volt between the points P and Q. They have connected the battery of 10 volt. So first of all, see, let us redraw the figure. This is S and this is R, okay, which is C5. Next, from S1 capacitance is coming and connected to P, which is C3. From P, one capacitance goes to R, which is C1. From S1 capacitance goes to Q, which is C4. And from R, one capacitance goes to Q, which is C4.
So first of all, what we have to do, we have to check whether C3 by C4 value is coming equal to C1 by C3 by, let me see first, from S to Q, S to Q which is C4, and R to Q, R to Q is C2, basically this is C2. So C1 and C2. So what is C3 and C4, which is 4 by 4? What is C1 by C2, which is also 4 by 4? That means these ratios are coming same. So we can tell, so we will be telling if the ratio is coming same, we will tell S potential at S and potential at R will be same. That is, if the potential at S and R are same, so no charge will be flowing, no charge will flow through C5. So basically the figure will come out like this. Figure will come out like this. It will come out like this. So the question is, they are telling if I connect a battery which is 10 volt. So basically see, C3 and C4 are in series. C3 and C4 are in series. So what is the net capacitance of that? 1 by C will be 1 by C3 plus 1 by C4, which is 1 by 4 plus 1 by 4, which is 2 by 4, which is 2 ohms. So C 2 microfarad. That means between, in the upper part it is 2 microfarad. In the lower part, it is 1 by C1 plus 1 by C2, which is again 1 by 4 plus 1 by 4, 2 by 4. Therefore C dash will be 4 by 2, 2 microfarad. So if I draw the figure will look like this. The figure will look like this, which is 2 microfarad, and connected to a 10 volt battery. That means now these two are in parallel. So what is the net capacitance? It will be 2 plus 2, 4 microfarad. Now the total charge will be C into V, which is 4 into 10, that is 40 microfarad is the total charge. That means 40 microfarad will be the total charge. Now see, this is 2, total charge will be 40 microfarad, and since this is 2 microfarad, so here we will be having, here in this part the charge which will come will be 20 microfarad, and here the charge also which will come will be 20 microfarad, because they are equal capacitance, total 40. So 40 microfarad will be distributed like this. Now see, 20 microfarad are here. That means this also will contain 20 microfarad because they are in series.
In series the charge remains same, and this also will contain 20 microfarad because they are in series. Clear? They are in series. So friends, let's see the next one. The next one says that, see the figure. In the figure we can see that 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 plates. That means there are 4 identical capacitors being made. See, one is between 1 and 2. This is 2 and 3. 3 and 4. And 4 and 5. So 4 shares a common plate with this and this, with 3 and 5. So we know that capacitance of each capacitor will be, and first of all they are all in parallel. Capacitance of each capacitor will be epsilon OA by D, right? Now charge on each capacitor will be C into V, which is epsilon OA by D into V. Now if you watch clearly, plate 1 is alone, so it will have a charge of plus Q, which is plus epsilon OA by D into V. But plate 4 is common for plate 3 and plate 5. Now 3 has a, now see, so it is sharing a negative charge with both the plates. That means it will have twice the negative charge. So the charge on this will be minus twice epsilon OA by D into V. This is the charge on the plate 4 and this is the charge on the plate 1. Clear? So let's move on to the next one. See the next ones, this is the figure. They are telling calculate the charge on each capacitor. So watch one thing, when we start the circuit, the charge will flow from here, the charge will distribute to all parts, and a time will come when all these capacitors will attain a steady state. Steady state. Steady state means when it can charge no more, no more charging. That means at steady state all the capacitors will reach to their final capacitance, maximum capacity. So then they will no more charge. That means no charge will flow in this part and in this part, but charge will flow from here. Charge will flow from here. That means this part of the circuit will only be valid. That means if I draw, only this part of the circuit will be operating. So which is 4 ohms, this is 1 ohm and this is 10 volt. So total resistance will be 5 ohms. So current will be V by R, which is 2 ampere. That means what will be the drop here? Drop, potential drop here. It will be I into R, which is 2 volt. So out of 10 volt, 2 volt gone. That means between this point A and B, the voltage available is 8 volt. The voltage available will be 8 volt. That means between A and B, the voltage available will be 8 volt, right? So if I draw the figure, so this is the first capacitance
Resistance will be of no use now because no charge will be flowing through it, so no potential drop. And this will be the so if I that means between A and B the voltage drop is how much? 8 volt. The voltage drop is 8 volt. Now this is 3 microfarad, this is 3 microfarad, this is 3 microfarad, and this is 3 microfarad. So in the first part it is series. That means in the first arm the net capacitance will be 1 by 3 plus 1 by 3, that is 2 by 3. So C will be 3 by 2 microfarad. Similarly, C in the lower arm will be this. They are in parallel. So therefore net capacitance will be 3 by 2 plus 3 by 2, which is 6 by 2, which is 3 microfarad. Therefore total charge, which is C into V, will be 3 microfarad into 8, which is 24 microfarad is my total charge, right? So this 24 microfarad which is here, 24 microfarad will be evenly distributed. So here it will come 12 microfarad and here it will come 12 microfarad because the values of the C up and down is same, so the charge will be distributed equally. Now this 12 microfarad is flowing in a series, so that means here will also be 12 microfarad. This will also contain 12 microfarad. So friends, let's see the next one. See, the next connection shows that these plates are connected to A and these two plates are connected to B. That means I can tell that this is the connection of 3 capacitors which are in parallel, having plate area A and separation D. So basically these are 3 capacitors which are in parallel. So the net capacitance will be C1 plus C2 plus C3, and each capacitor's value is what? Epsilon OA by D. Therefore the net capacitance will be what? 3 epsilon OA by D. Clear? Similarly here it is also, see, 1, 2, 3. There are 3 capacitors here. Here also the capacitance will be in parallel 3 epsilon OA by D. Clear? Next, come to this part. See, this is the parallel plate in which half part is put with a dielectric K1 and half part is put with a dielectric K2. Now watch here. If the charge comes like this, if you watch clearly, the charge is coming like this and passing through both undistributed. That means these two, the part 1 and part 2, are in series connection. So what is the net capacitance? It is 1 by C1 plus 1 by C2. So 1 by C1 will be what? K1 epsilon O A by D by 2 plus 1 by K2
epsilon OA by D by 2. That means how much it's coming? 1 by C will be, see, D will go up, so it is 2K1 epsilon O plus D by 2K2 epsilon O. So 1 by C will be, if I take D by 2 epsilon OK common, it is 1 by K1 plus 1 by K2. Therefore, the C will be 2 epsilon OA K1 K2 by D K1 plus K2. Correct? Next here. See, the charge is coming like this. But when there are two medium, the charge will distribute some here and some here. So when the charges distribute, they are in parallel. So the net capacitance C will be C1 plus C2. So what is C1? It is K1 epsilon O. Area will be A by 2. Plate area is taken half and distance is D, plus K2 epsilon O A by 2 by D. So what is the capacitance? Epsilon O A by 2D is common, so it is K1 plus K2. This is the answer. Clear? So next, move to the next one. In this case, see, the charge Q is passing like this. Some will go here, some will come here, and what will come here will then get will be then passing through this. That means K2 K3, these two parts are in series, and K1 with K2 K3. First, K2 and K3 are in series. So what is the net capacitance of them? It will be 1 by C2 plus 1 by C3. That is 1 by K2 epsilon O A by 2 by D by 2 plus 1 by K3 epsilon O A by 2 by D by 2. So 1 by C will be this, D will go up, so it is by 4, that means 4 will come down. So D by 4 K2 epsilon OA plus D will go up, I think 4 will get cancelled. 4 will get cancelled. Let me see. By 2, yes, 4 will get cancelled. It is D by K2 epsilon O, and it will be D. This will be D by K3 epsilon OA. So 1 by C, D by epsilon OA (1 by K2 plus 1 by K3). C will be epsilon OK2 K3 by D K2 plus
K3. Next, this C will be in series, will be in parallel with K1. So net capacitance will be 1 by, this is in parallel, therefore the net capacitance will be added up, that is C dash will be K1 epsilon OA by 2 by D plus C will be K1 epsilon OA by 2D plus epsilon OA K2 K3 by D K2 plus K3. So how much we can take common? That is epsilon OA by D, which is K1 by 2 plus K2 K3 by K2 plus K3. So this is my capacitance. This is my capacitance. Clear? Next, for this part, see, they are telling that this is the connection and it goes infinitely, right? So please watch one thing, that is, see the part which is repeating and let the net capacitance be C. So see the part which is repeating, 1 and 2 microfarads are every time repeating. So what we will do is, we will take the 2 microfarad, the 1 microfarad, and we will connect here C. Let the net capacitance be C. Clear? So this is 2 microfarad, 1 microfarad. See the rule for infinite, capacitance connected, infinite series connected. Okay, see the rule, how to do it. The part which is repeating, please take that part. Okay, first of all take that part and then connect the capacitance. Let the net capacitance of the whole be C. So we have to do like this. So basically what we can see, that the 2 microfarad and the 1 microfarad which are in series, this is 2 and C. 2 and C are in series. So what is the net? 1 by 2 plus 1 by C, which is C to C. That means the capacitance will be C by C plus 2, and this is in series with 1, therefore the net capacitance will come how much? 1 plus 2C by C plus 2, and mind it, this should be equal to C. Please keep this in mind when you go for infinite capacitance. The net capacitance, first of all you see which part is repeating, first of all you see which part is repeating. With that part put a capacitor C. Okay, and now find the net capacitance, and that answer should come C, because the C is a huge capacitance. So the value of this will come C plus 2 plus 2C by C plus 2 equal to C.
That means 2 plus 3c will be c square plus 2c, and c square minus c minus 2 equal to 0. So if you solve it, the value of c, I'm solving it here, please watch carefully. I'm solving it here. Value of c will be minus b, that is 1, plus minus b square, which is 1, plus 8 by 2, which is coming 1, plus minus 3 by 2. Minus we cannot take, so it is 4 by 2, which is 2 microfarad. This is the final answer of this. This is the final answer of this. Clear? So friends, let's see the next sum. The next sum says that point B is earth. That means here potential is 0. Here potential is 0, and we are giving 12,000 volts to the point A. That means here VA is plus 12,000 volts, 1200 volts. Okay, so see, 4 microfarad and 2 microfarad are in parallel. So what is the capacitance of this? It will be 4 plus 2, which is 6 microfarad. And now that 6 and 3 are in series. So what is the net capacitance? 1 by 3 plus 1 by 6, which is 2 plus 1, 3 by 6. That means the net capacitance is coming 2 microfarad, right? Therefore, what is the charge, total charge? It is the net into the potential. That means 2 microfarad into 1200, which is 2400 microfarad is the total charge, right? That means the charge on the 3 microfarad, will also be on the 3 microfarad, it will be this only. So how much potential does the 3 microfarad take? It will be the charge by the capacitance, that is 2400 microfarad by capacitance is 3 microfarad. So this is coming 800 volts. That means the charge between A and C should be 800. So potential at C will be plus 800 volts. Correct? So that is the answer of this. Find the potential at the point C. Next, they are telling that we have, this is the circuit. Potential is given 100 volt. And B and C, what is the potential between A and B? A, this is A, and this is B, and B and C in the steady state. So as I know, in the steady state, what happens is all the capacitances will be in their full potential, and full charge. So in the steady state, they cannot take any more charges, right? They will not be able to take any more charges. So what will happen? See, that means when they are in the complete steady state, so what will happen is no current will be flowing out. The current and the charges which will be flowing to these parts will be 0. The charge flowing to these parts will be 0 because all are in the steady state, right? That means
there will be, if the charge flowing here is 0, so charge flowing here is also 0. That means the potential across this D and E will be 100 volt. Because if no charge is flowing through them, no current is coming out, there will be no potential drop here. So total voltage will be across D and E. So what is the charge? What is the charge between, they are telling what is the potential between A and B. Okay, fine. So potential at A is 100 and the potential at D is also 100, right? So that means between A and B, you want to find out. So watch here. So if you watch clearly, friends, we can see that this point, if I redraw the figure, see 3 microfarad and 3 microfarad, they are in parallel. So they are in parallel. So here, if I can draw the figure, you can see that this 3 microfarad and this 3 microfarad, they are in parallel. So if they are in parallel, what is the capacitance between them? We know it is 3 plus 3, which is 6 microfarad. Similarly, see this 1 microfarad and this 1 microfarad. They are also in parallel between each other. So what is the capacitance between them? That is 1 plus 1, which is 2 microfarad. So if I redraw the figure will look like this. It is, yes, if I redraw the figure looks like this. So this is the 100 volt, this is the 20 ohms, this is the 10 ohms, this is the 2 microfarad, and this is the 6 microfarad, this is that 1 microfarad, here is the point B, here is the point C, and watch here, here was the point A, here was the point A. So can I tell this and this point is the same point A? This and this are the same points A, right? So now if you watch properly, see this 6 microfarad and 2 microfarad, they are in series. So what is the net capacitance between them? 1 by 6 plus 1 by 2, which is 6, that is 1 plus 3, which is 4 by 6, and which is 2 by 3. So C was 3 by 2 microfarad, right? So the total of this is coming 3 by 2 microfarad. Now see this 3 by, so if I draw the figure, here is a 3 by 2 microfarad, here is a 1 microfarad, and here is a 20 ohms, 100 volts, 10 ohms, this is 1 microfarad, and this is 3 by 2 microfarad. So watch here, in the steady state, mind it, in the steady state means all the capacitors are fully charged,
all capacitors are fully charged. All capacitors. Fully charged. So if every capacitor is fully charged, that means no more charge is flowing into any part. No more charge will be flowing into any part. So there will be no drop. In this, there will be no voltage drop, no PD drop. There will be no PD drop, no potential drop here. Correct? That means the total 100 volt and 100 volt will be available for these two capacitors. Okay, that means these are of no use. These are of no use. So basically what I can tell, these two resistances are of no use, means I can easily cut this part and cut this part. So after this, that means there is no use of this 20 ohms. There is no use of this 20 ohms and this 10 ohms, right? Because it's fully charged. That means no more current is flowing. So those two resistances are of no use. So basically you can see now here that the potential 100 volt is between the two capacitors. Right? It is between the two capacitors. So here I can tell if the point A was here, the point A is here also. This is the point A. Right? That means here potential was 100. How much? This potential is 100 volt. 100 volt. Correct? And here the potential was how much? This was C. If this is C, if this is C, this is also C. That means here the potential was 0 volt. 0 volt. Okay. So what is the charge in this 3/2 microfarad? Charge in the 3/2 microfarad charge is C into V. So it is 3/2 into 100, which is 150 microfarad. Now if I draw the figure properly, again, if I draw the figure properly, this was actually a so please watch properly, that we know that the charge okay, so this is 100 volt, this was 6 microfarad, this was 2 microfarad, this was 1 microfarad. Okay, so now let us watch. That is, in this part, here was A and here was C. In this part, 6 plus 2, which was 3/2 microfarad. Okay, what is the total charge? Total charge was this. That means these 6 and 2 are in series. That means the charge here also is 150 microfarad, and charge here also is 150 microfarad, because charge in series remains same. This was point B. So what is the potential across 6 microfarad? What is the potential across 6 microfarad? It will be Q by C, which is 150 by 6, which is coming 25 volt. That means the 6 microfarad will hold 25 volts. The 6 microfarad, it will hold how much? It will hold 25 volts, right? So if the 6 microfarad holds 25 volts, here it was 100 volt, at the point A it was 100 volt, and this takes 25, so at B it should be 75 volts at B. That means potential
between A and B will be 75 volts. Therefore, the potential between B and C should be 25 volts. Okay. So this is the solution of this sum. This is the solution of this sum. I hope you have understood. If you not, then please pause the video, watch the sum again properly, slowly, so then you will be able to understand it. Clear? Next, let us see the next part. Here they have given the EMF of the source. This is the 10 volt. This is 10 volt. The capacitors are given and the potential difference VA minus VB is given 50 volt. Find the voltage across each capacitor. Okay. So see, VA minus VB, this is given 50 volt. VA minus VB is given 50 volt. So this is given 1 microfarad. This is given 2 microfarad. So watch here, friends. If I write the total potential, suppose this is plus Q, this is minus Q, plus Q and minus Q, right? So if I write the potential difference between VA and VB, how will I write? For the first capacitor, it will be Q by C1. Then it is connected to the negative potential, so minus E. Then it is connected to the another capacitor, so the potential will be Q by C2, right? This is given 50. So Q by 1 microfarad minus 10 plus Q by 2 microfarad. So it will be 60 is equal to 3Q by 2. So Q will be equal to 120 by 3, which is 40 microcoulombs. This is the charge. Find the voltage across each capacitor. So this is the charge. Therefore, the potential across C1 will be how much? It will be Q by the C1, which is 40 by 1. So 40 volt, and PD across C2 Q by C2, which is 40 by 2, 20 volts. So these are the answers, right? Next, see, this is a thing given that here is a plate A, 3A, and there are 3 plates A by 3, A by 3, this is A by 3, and again one plate A by 3. So we are making 3 capacitors. Here the distance between the plates is D, here it is B, and here it is B, right? So the width of each stair is A and height is B. The width of each stair is A. That means this part, see, if you take the plates like this, this is B, this is B, okay? This is sorry, this is A, this is A, this is A. Clear? So this is how we are making the capacitances. This is how we are making the capacitances. So watch here, there are 3 capacitors in parallel. There are 3 capacitors. The first capacitor, let me write down, the first capacitor C1 will be epsilon O A by 3 by, what is the gap? Gap is D. Gap is D. So which is epsilon OA by 3D. Clear? Second capacitance C2 will be
epsilon OA by 3, and the gap is this much. This is the B, this is D, and this is B. So this is how much? D plus B. So it is D plus B, so which is epsilon OA by 3 D plus B. And what is the capacitance C3? Epsilon OA by 3 by, it is D plus 2B, which is epsilon OA by 3 2B. Now these capacitances are in parallel, therefore the net capacitance will be how much? C1 plus C2 plus C3. Why? Because see, the charge will come and distribute. Please understand why it is in why it is in parallel. Because if I am passing any charge, then this charge will come and distribute one to this, and some part to this. As the charge gets distributed, we know it is in parallel. So C net will be, if I add all the three, see, we can take epsilon OA by 3 common. So it is 1 by D plus 1 by D plus B plus 1 by D plus 2B. And this is the answer of the total capacitance. So friends, this is all about the capacitance chapter, and I hope you have understood everything, because I have tried out each and every part of the theory and I have tried to give it as simple as possible to you. I have included each and every variety of the numericals, explained you in details, and if you are not able to understand, please comment in the comment section, and also watch the video 2-3 times, because if you are learning for the first time, it is not possible for you to understand. Sorry. So what you should do is watch the video, pause the video, watch it 3-4 times, then only you will be able to understand. I have covered up all varieties, all type of numericals which are going to come for the board exams and which will be helpful to you in the competitive exams also. So hope friends you have understood, and if you have understood and if you have liked this, please watch the chapters of the electrostatic 1, 2, 3 already uploaded, and this was the chapter 4. This was the chapter 4. In total 4 chapters is your electrostatics. 4 chapters is your electrostatics. Excuse me. So please watch them, and if you like, and if you really like it, please do like, share and subscribe my channel. Okay, so hope you have understood the video, hope you have liked this session. So we'll meet again with another session of the physics. Till then, it's goodbye from my side, and thank you very much.